Good evening. We are live on Facebook with RJ Mukta. So here we go with Dr. Mahashweta. Hi. Hi. Mahashweta, unmute yourself. Hi, Mukta. Warm welcome to you. It's so good to see you after such a long time. And there's this song that I've chosen for you from this film called Anurodh, where the protagonist of the film, Rajesh Khanna, he happens to be an RJ and a vocalist. And a girl was in love with the voice. So the song goes like this. आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात इसी जगह पे मुझको आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे मिलना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं. And Mukta, you happen to be one of them. Thank you so much for being a part of Veranda tonight. Wow, that was so beautiful. Today we have a music lover with us, RJ Mukta. So आज बहुत सारे गाने होने वाले हैं, तो आज की शाम कैसी होगी उसका कुछ हम अंदाज लगा सकते हैं शांतना के इस गाने के साथ. So over to you, Shantana, for a beautiful number from Shantana. Yes. Thank you, Anila, and good evening, Music Veranda. Welcome to our veranda, the place of joy and happiness. And the song goes, which is everybody's favorite. ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. ए जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले, हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दों में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले, आ गले लगा ले. Thank you. Wow, beautiful. Very nice. So lovely start by Dr. Mahashweta and then followed by Shantana. Such a beautiful song. और आज की शाम कुछ ऐसी ही होने वाली है. नमस्कार, स्वागत, गुड इवनिंग टू आवर ब्यूटीफुल म्यूजिक वरांडा. म्यूजिक वरांडा कुछ ऐसा ही वरांडा है जहां हम शाम को इकट्ठे हो जाते हैं बिना कोई एजेंडा के, बस यूं ही वरांडा में बैठे रहते हैं कुछ सुकून हम पाने के लिए. कुछ देर दिमाग नहीं दिल चलेगा, कोई जज नहीं करेगा, बस शाम यूं ही गुजर जाएगी गानों से, बातों से और गपशप से. जहां हम रोज वर्चुअली मिलते हैं 9 से 10 बजे तक, और हम लोग मिल रहे हैं since April 2020. So a big applause to Music Veranda and to all of us. शायद Music Veranda का इंस्पिरेशन भी हमें FM से मिला है.
और आरजेस को तो बहुत सलाम, जो ये काम बहुत बखूबी से कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को एनलाइटन कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। और आरजे की बात हो और आरजे मुक्ता की बात नहीं हो तो बात में कुछ वजन नहीं लगता है। सो आर मुक्ता, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू एट म्यूजिक वरांडा। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आरजे मुक्ता। कन्व्यूट करके प्लीज स्वागत करें तालियों के साथ मुक्ता का। So Mukta, Welcome, Mukta ji. welcome Welcome, Mukta ji. Most welcome to our veranda. Yeah. Thank you, Renu. So Mukta, she's as you all know, she's a wonderful artist. She's a beautiful. I don't need to say, we all knows her. So, but still, I always say people who are healing are employers of God, as they have that powerful aura, that sensitivity, and those energies. And RJ Mukta is one of them. So Mukta, I invite you. This show is yours. ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी इनसाइट्स, आपकी इंस्पिरेशंस के बारे में. So that's my first question. A little about your journey. Thank you. Thank you, Neela, for welcoming and being a part of this program, Music Veranda. I actually connected Music Veranda through Mahashweta, and thereafter Neela, and now the journey has just started from a year now, because Mahashweta was just connected to me through some studies, and from there I got to know to her. And yes, she was into music, I got to know, and then I did some personal conversation with her, and I did a small interview of her on music and her teachings and her insights of her life, and thereafter I connected to Anila. That's was just a short story to connected to Music Veranda. Now, coming to my life and my things, I am born and brought up of Delhi, and my parents hail from Delhi, and being an Indian, they are Sindhis now, and forefathers were from Pakistan. And me being here, I had no agenda as if where I'll be landing up to. It was just when I was a small child, I had small dreams, which sometimes were driven to some inspirations, some fulfilled, some unfulfilled, as just a normal life that everyone goes through. So I was never ever inclined that I will ever become an RJ ever. I had never thought of, because my inclination was towards being a doctor in my early childhood, being in 10th, 11th, 12th, because 10th I had to switch over because of some percentage of marks to another school. I'm St. Martin's, which is again in Delhi, and thereafter I joined up DAB for science. Thereafter I had the medical, which made me landed me to a bio, and I did 2 years science. Thereafter also I did some emphasis. I supposedly, I don't know, it got cleared or I don't remember now. But due to the lack of time, I could not even fill up the college forms. So that landed me to an English honors. So this is English honors short story. Besides that, during my college with English honors, I used to be so occupied. I didn't have any time, even breather for me. Because in the morning from 9 to 2, 3, I used to go to the college. I had 1 hour, 2 hour session of computers, which was multimedia web engineering. I've done web engineering as well. And in the evening, I used to do drama practice and on-stage practice. And when I got to get time, I used to go with my sister. She was also an artist. She was with All India Radio then. And from there, I used to just got connected, and she was like, okay, do some programs here. I did one program in Bhuvani in the Mehfil, then in the Groove, one program, and Man Bhavan, one program, and couple of quiz programs in GOS, that is General Overseas Service, which is broadcasters abroad, out of India, Southeast Asia, New Zealand, Australia, Asia, other part of the Asia. So that's how I got connected. So in my college also, I tell you, I was also always been called as a timer, because whenever somebody used to tell me, ask me what's the time is, I used to say, okay, it's 1:24 and 20 seconds. They used to remember me that way.
And there also because I was, they knew that I was into radio. I was doing certain programs, and my sister is in radio RJ also. And also because of my dressing, I used to be very popular because of my dressing then. So I was like a fashion icon then at that time as well. And doing the stage, doing this web engineering, doing this English honors, I never knew I had from doctor when it switched over to another dream of my life. Continuously, I was just working here and there. I was doing some promotions also, some part-time programs, some part-time shows, some anchoring as well on stage. I did for Hindi Hindustan, and a couple of more events. Thereafter, I started learning some events also, calling for the events, being a hostess for the events, and organizing events, doing calling and taking confirmation from people for the event. So that's how I started my career also. So I was literally actually very busy. I never knew from doctor, being a doctor, switching over from doctor. When I started up with doing English honors, whenever I started doing this radio, and it just moved on. The time just flew like anything. I was actually working and running like a horse that moment, right? So after my college, I did audition for radio again for being an casual announcer there and presenter. So I got selected the same time in Giovanni, same time in General Overseas Service, and again it was like a good journey started over. With that was a part time because it's still a part time. It's like 5 to 6 hours 6 days of duty I get a month, and professionally I had to do something. So I learned events, being into an office in Narayana, and learned and took it as a career for about 5 to 6 years. And switching over from an executive to senior executive, hell lot of politics I had to face, hell lot of politics. And I ended up in as a senior manager for a company in Hyderabad. I was doing not activation for them again. But my radio thing was also working because my office also knew I had to be at radio by 7. I had to start my show at 7 in the evening. So whatever I had to do in the office, I had to wind up by 5:36, 6:15. I had to rush like anything to the radio a minute before or 2 minutes before, or at times 5 minutes after. It was like I was really, really rushing up to work. And when I had enough at times. I had even when I was doing the general overseas service, that is broadcasters abroad, I used to do night shifts as well. So night shifts are like when I used to do 9 to 5, 6 in the evening office. I used to come back by 8:30. Again, I had a pickup by 11:30 in the night. I used to do the show from 2 to 6 in the morning, and used to come back by 7. Again, I just had a 1 hour sleep. Just again got quick, had a bath, and rushed to the office. I never knew when I'm going to eat, when I'm going to look up for myself, or even I didn't had any frame of mind where to switch over what to think then. So that was actually time when a week I was like sleeping for like 3 nights or 4 nights at time. It was like this. So around 2008, there was a recession time which came in. So from senior manager, I left the job. I started my own venture. I became an entrepreneur and events. And thereafter, I got to know the feel of working, doing marketing at the same time, arranging everything at the back end, and actually performing at the front end also. So that again switched over till 2014. I was there with events, and recently from 2014-15, we got an inclination towards abroad study. So somebody said that why don't you start out with loans, education loans, because people are dying up for it because they're not having any financial background, any assistance for this. So then me, as if I have a partner with me, so we both together started working with that because events had made us a very bad backlog in monetary funds and working and up down schedule time and whatnot.
So I said, fine, let's take this jump at this. We don't have anything to invest that moment. So that's how we started doing until date. I even learned IELTS is like International English Language Testing System, which is the first gateway for study abroad. And from there, I have done English honors. I'm a very well versed in English. I'm a very good communicator. I can speak well. I can teach well. So why don't I take up this as a career as well? So I again got this opportunity, and then now I'm doing online and offline both. In this pandemic era, I did this online, and currently I'm doing online, offline both as per the students' convenience, and I make a tailor-made thing. So this was the journey till now. Now again, we started doing visas, study visa. Anyone of us, any of you who want to connect, do let us know, and you can share our feedback as well. If any of you want some questions, queries, thereafter you can ask me. So here I am with like about 20 plus experience with events and study abroad, everything, and 20 plus experience with All India Radio. Thank you so much. Wow, this is wonderful, मुक्ता. और इससे यही पता चलता है कि मतलब कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत है इन सब चीजों के पीछे. How hard work you have put in to become one. So we are all getting inspiration. As you can see, we have young children also, and they aspire to become RJs. So I'm sure they must be getting this. Why not? मेहनत के बिना पैशन के कुछ भी नहीं अचीव होता है. That's very very important. Passion, and then आपको कहीं पे भी stagnant नहीं होना. आपको अगर कुछ चीज इंटरेस्ट करती है, that is your next career, that is your next jump, that is your next step, that is your life. So I always say each and everyone, never be stagnant. अगर एक आप कहीं पे fail हुए हो, please move on. You want to try it? Try it 4-5 times. Still you have not got through it. You have again failed. It's not in your destiny. That's why are you failing of it. So please move on to a next dream. You should always have a plan A, B, C, D, N number of till Z. Even A1, A2, A3 also there should be there. Because life is endless. Life is beyond our expectation. God has given us such a wonderful breath, because this pandemic time, the 2 years and a half year, has taught us life is short. You have to enjoy every moment. You have to learn new technologies. You have to be updated at every moment, and you have to be on toe. I can't tell you, because Anila and me were speaking in the morning, that there should not be any agenda. You want to talk to somebody, you want to meet somebody, you want to just take a phone and call. That's it. Because Anila and me just happened to speak to us like we are knowing each other from ages. Me and Mahashweta just talk each other as in we have been like old sisters. So that's how we connected that way. So I always tell each and every person, whether the person who is going through ups and downs of their lives also, say this phase is never going to be there. The next moment there might be some changes. So wait, have some patience, go through it, because that is also there. That is a part of life that will nurture you, make you, break you, and again make you. Right? Beautiful. Yes, Anita? Very nice. So, Mukta, you now have another alternative career. Along with being a teacher and RJ, now you could please try up motivational speaking, because I think you speak so well. Sure, our YouTube channel. By the way, I follow her on the Insta. She has this caliber of being a stand-up comedian as well. And very soon I'm going to see her somewhere in Gurgaon, Cyber City, coming up with jokes. And they're very original and very, very funny, obviously. Yes, yes, yeah. She appears to be so serious, but then when she cracks jokes, she's a different person altogether. So I like that variety. Me and Mahashweta once came to my office and we were like, are we meeting for the first time? Mahashweta? Are we meeting for the first time? It's like that. So I have never ever changed a different medium to know anyone, whether it's a call, whether it's meeting, whether meeting for the first time or not meeting for the first time.
I always welcome people at any sphere of life because me being an original Mukta Rajasthani, I am been loved by youngsters younger to me. I have been loved and admired by the olders to me. In my age group, never nobody. The people who like gel together, but yes, younger and older always. I'm happy person sitting with them. I get inspiration. I get knowledge from them. I speak to them about life. So I wanted to do this. I have made a page of day-to-day problems, but I have not worked over it as of now. But yes, I have to work on it. I need to take down this time making a special and original videos for this. I should make that. Mukta, I'm waiting for that podcast thing of yours. It should come in the form of podcast, and you will have a larger, audience for that matter. And there's this girl sitting over here. Her name is Arnaz Pradhan. She's 17 years old, and she's very, very savvy. And maybe you two guys can collaborate. Let's. Sure, why not? Can I have a word with her right now? Yeah, sure. Hi, Arnaz. Hello, ma'am. Yes. Yeah, Arnaz, Hi, we Arnaz. call her youth icon of Music Veranda. And she's from Vapi, and in fact, she's going to Canada for her further studies. And she has started a beautiful page by the name of Youth Unleash. So yes, over to you, Arnaz. So anything that you have to say, या आपको गाना गाना है हम के लिए? Yeah, so I would like to sing two songs, and जैसे RJ Mukta said that it's like we need to live our life to the fullest, and whatever feel like we need to do that. So those two songs are based on this. So Please. पलकों की लेके साए पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो ना हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो Beautiful choice. Beautiful choice. Thank you. छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा थैंक यू Beautiful. Thank you so much. एंड हुक्ता आप दूसरों को हम सभी को गाने सुनाती हैं रोज तो आज हम आपको सुनाना चाहते हैं बिकॉज I'm overwhelmed. Thank you. क्योंकि आप you fill cups of everyone and today is our turn to fill your cup with joy and with our gratitude. This is a gratitude that we are paying. So we have couple of children. Ane is there, Rishta is there. Ane is from Panipat. Arnaz is from Vapi. So Ane, आप कुछ गाओगे हम के लिए? Yes, ma'am. I'll sing Lajja Gale. Hi. Yeah, and yes. So since you had reminded us, this is a sadhana song. Am I right? Lajja Gale. I maybe yes. Yes. Okay. तो आपने ने आज बताया कि साधना जी का बर्थडे है. While we were talking, so we have requested a few sadhana songs also. Yes, Anya, over to you.
और सभी एक ही अंतरा गाएं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से थैंक यू। Very nice. थैंक यू सो मच। और मैं रिशिता से रिक्वेस्ट करूंगी, रिशिता आप ही गाएं। Good evening, everyone. Welcome RJ मुक्ता जी in Music Veranda. आज मैं आपके रिशिता राजस्थान से है, भिवानी में। आज मैं आपके लिए गा रही हूँ वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा Okay. वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम क्यों, एक मैं जवां नहीं हूँ और भी तो है, हाँ मुझे ही घेरे आखिर खड़े हो तुम क्यों, एक मैं यहाँ नहीं हूँ और भी तो है। जाओ जाके ले लो जो भी दे दे तुम्हें हाथ, जहाँ सब है वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। थैंक यू। Thank you. Very nice. Thank you so much. Awesome. I'm really overwhelmed कि छोटे-छोटे बच्चे पुराने गाने गा रहे हैं and they have so lovely voice and interest in the old songs. Lovely. Good. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस मुक्ता जी, एक दिनेश जी भी हैं, ही इज बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली, और वो एक गाना गाना चाहते हैं। वो गाना वैसे तो हम लास्ट में गाते हैं, लेकिन दिनेश जी को जाना है इसलिए हम वो पहले गा रहे हैं। Okay. Please. थैंक यू अनिला जी। वेलकम आरजे मुक्ता जी। आज तो आपसे रूबरू मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बातें सुन के। वैसे तो रेडियो पे सुनते ही हैं, लेकिन रूबरू सुन के और अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो गाना लिया है फिल्म हम दोनों का है, रफी साहब का गाया हुआ। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे
के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. Thank you, thank you. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. Lovely. Yes, apologies ये गाना बीच में डालने के लिए because ये last मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ. बाद में छोड़ के जाऊंगी. so मुक्ता, yes. ये गाना ज्यादा दिनेश जी पे लागू होता है rather than हाँ. like he has to leave. उन्होंने मुझे Right, absolutely. जाना है, मैंने बोला अच्छा ठीक है आप पहले गा दीजिएगा. So thank you very much दिनेश जी, बहुत मजा आया. ये गाना तो all time favorite है, ये कभी भी गाते हैं. और मुक्ता, I wanted to ask you कि जब what when you are RJing तो क्या ऑब्जेक्टिव चलते रहते हैं आपके दिमाग में, कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या कन्वे करना है, क्या मैसेज कन्वे करना है, क्या फीलिंग्स कन्वे करनी है? राइट अनीला, हम लोगों को हमेशा एक तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जाना है. आप कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी हड़बड़ी में हो, कितने भी आप लेट पहुंचे हो बाय चांस या किसी प्रॉब्लम से गुजर कर, आप जैसे ही आपके सामने माइक है, आपका टाइम शुरू होता है, जैसे ही तो यू हैव टू बी वेलकमिंग पीपल, यू हैव टू बी ऑलवेज विद अ पॉजिटिव वाइब, विद information which people don't know, maybe a small gesture of just a small quote, जैसे हम बोलते हैं smile is contagious, and when I smile you are also smiling, when I am laughing and you're also laughing, laughing is also contagious, and when my positive thought comes to you, you are like connecting yourself, then only you listen to a radio, and on that tone, when you quote some good words with a good music, people do listen. I always say that आप गाने को ढूंढ रहे होते हो, साथ में गाना भी आपको ढूंढ रहा होता है. आप किसी भी मोड में हो, बेशक आप अच्छे मोड में हो, बेशक दुखी मोड में, किसी मोड में हो, अगर आप उस गाने को चलाते हो, आपको लगता नहीं दिस सॉन्ग इज राइट नाउ मेंट फॉर मी, कोई भी सुन रहा हो, या आपको लगता है कि नहीं मैं अगर हैप्पी मूड में हूँ तो मेरे को उस टाइम हैप्पी गाने ही सुनते हैं, तो हमें उस हिसाब से लाइन भी करना होता है, कुछ पॉजिटिव वाइज भी देनी होती है, कहीं उनको सलाह भी देनी होती है इन नॉर्मल शो प्रोग्राम, कहीं हम लोगों को टाइम का ही बाउंडेशन के साथ, तो जैसे हम कभी इंटरव्यू करते हैं या कॉल पे लेते हैं या इन्फॉर्मेशन या हमारे कॉलर्स आते हैं कॉल करने के लिए, हमें लिस्टर्स आते हैं, तो हमारे वो इंटरेक्शन नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कैसे वो म्यूजिक से कनेक्टेड है और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं. यही 3-4 वर्ड्स चीजें ज्यादातर हमारे साथ होती हैं. अब हम लोगों के पास जैसे इंटरव्यूज टाइम आता है आजकल मॉर्निंग में 10 to 11, 11 to 12, या तो कॉलर्स आते हैं या हम लोग किसी ऐसे सेलिब्रिटी टाइप्स के लोगों को आते हैं या ऐसी फील्ड के प्रोफेशनल लोगों को आते हैं, जैसे कोई अभी लेटेस्ट मेरी जैसे 31st को ड्यूटी थी मॉर्निंग में, तो आई ब्रॉट इन वन डॉक्टर, ही वाज डूइंग जॉइंट नी रिप्लेसमेंट सर्जन, ही इज अ जॉइंट नेस, ही इज इन पुणे, तो आई हैपन टू कनेक्ट टू हिम, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे सिर्फ ये पूछा कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं, प्रिकॉशंस, what age generally go through and how is the what time duration a person takes. एक पॉजिटिव भी हो, कुछ डिप्रेशन भी हो गई, और से लोगों को भी पता चली कि उनको एक नॉर्मल इंसान को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, कब लेने हैं और क्या क्या करने से वो कभी भी नहीं होगा. So that kind of information we have to be always updated with and connected to people. Me being into आज तो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है कि मेरे को अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन लेके जानी है प्रोग्राम में, ताकि मेरा वो 3 घंटे का शो जितना भी है प्रोग्राम, तो मेरे को वो सारी इंफॉर्मेशन, मैं एम नॉट सेइंग कि 100% दूं, लेकिन एटलीस्ट मैं 70% जरूर बोल के आती हूँ. वो कहाँ से क्या पिक करता है इंसान, इट्स ऑल अप टू देम. हाँ जी. मुझे लग रहा है अनिला बिल्कुल मूड में बैठ के सुनूंगा आज. बहुत मजा आ रहा है सुनने में. बहुत Hi Anila, I would just like to add something. I'm Aarti here, and just yeah, you know, for Mukta, first of all, welcome Mukta. I'm Aarti, and my best wishes to you for now and always. And MB is really privileged to have you here. And just one thing which I feel for RJs and you, that the job of RJ is, I would say, it's far beyond easy, and it's amalgamation of so much intuitiveness, engagement, intelligence, and so much, you know, emotional quotient is required in this job, so much awareness.
and so much, the thought process has to be so clear. So I think there's so many hard skills, soft skills, and knowledge which is required for this job to be successful. I think I still feel that though RJs are just like heroes for us and it's like heroic job, but still it is underrated. I would say that RJs, really hold a lot of significance in vibrant engagement, in creating the aura of the show, in carrying the publicity, in creating the message, in creating the environment, and ensuring the shows go on. There's so many multifacets involved in this job. I think you are doing a great job, and long life RJs and long life Mukta. I'm sure a way to go. Thank you, ma'am. Thank you so much for such an inspirational words and accepting the way we go through. Yes, Yes. at the same time, I tell you, for the encouraging words and even praising me for that. I tell you what, at the same time, I am taking up my cue sheet. I am same time making up what next song has to be played, what next I have to talk, and abruptly somebody calls, and I'll take that call, and I have to be prompt enough to respond and make up questions at the same time. बिकॉज कभी कभी जैसे मैं किसी का इंटरव्यू लेती हूँ तो कभी वो क्वेश्चन लाइन अप ही नहीं होता, तो उसके टॉक्स के अंदर से भी मुझे कहीं ना कहीं उस चीज को बिल्कुल प्रेजेंट माइंड के साथ आई हैव टू पिक अप दैट क्वेश्चन and I have to conclude in a very softer manner because time also takes at times, and because we have to take breaks, we have some ads, some promos at the same time, so there are a lot more things. At the same time we are connected and we have to be present that moment. मतलब मैं हमें phone भी silent रखना होता है, we cannot take up any calls, but yes, we have to take up the messages if comes up. अगर कोई call आ रही है उसको भी उठाना, उसको भी attend करना. There is somebody come walking into your studio, there's live, you cannot even put your fader up जब तक आपको बोलना नहीं है, उससे पहले आप बोल भी नहीं सकते जब तक गाना भी खत्म ना हो. So I think we are on to that moment. हम कुछ नहीं सोच सकते उस टाइम पे. Yes, Mukta, I really believe and feel that it's a heroic job to be a successful RJ. And I think that for that 2 hours, 3 hours, or 4 hours of show, you have to prepare all day. So it's my recommendation to all media authorities listening that you must double the salaries of RJ or increase the perks and benefits, because you truly deserve actually, That's my endeavor. So I hope to see you more often, and I really looking forward to see you flying and collaborate more with MB. Beautiful. Thank you. Yes. Mukta, I would just like to share a little about Aarti. She is a very big contributor to Music Veranda and otherwise also. She has a command over Urdu, over Hindi, and over English. She's like a very linguistic. Very linguistically, she's very strong. And 2 days back, she had curated a beautiful program on Amrita Kulkar. And I would recommend that you see that program. It was done very beautifully. So she's a poetry enthusiast also. So thank you. Nice. Yes, thank you. और अब मैं महाश्वेता has a question, but before that, महाश्वेता हम साहिब से गाना सुन सकते हैं क्या? हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं. Okay, thank you. Yes, over to Sahib. नमस्कार, प्रणाम सभी को. प्रणाम मुक्ता मैम, प्रणाम देवी दादू, प्रणाम मेरे गुरु जी, और आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम. तो मैं एक गाना गा रहा हूँ. इस गाने का नाम है और इस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, और प्लीज देखना, इसकी बहुत सारी है.
से. Thank you. Very difficult song, Thank Sahib. you. How old are you? How old is this? 10. How old is he? 10. 10. 10. Nice. I'm glad. Thank you Sahib, for this beautiful और song. इसने गाना भी आज पहली बार सुना है और थोड़ा पहली बार इसके गाने का भी. You know, he पहली always बार likes to हाँ, थोड़ी do it. practice में रहता है. Sahib Thank came you. to know that ये it is वाला- a favorite song. That's why he prepared within a span of 2 hours, probably. Oh, nice. Very nice. ये Thank you. गाना मेरे को गुरुजी ने मेरे को सिखाया है और उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई है. Wow, very nice. आज ही कराइए. आज ही सिखा. Very good. Yes, He's Mashweta. the youngest one who sang for me today. Anuradha, are you getting late? He's the Should I- youngest one. Yes. Okay. Mashweta, let's invite Dr. See, Anuradha. yeah, please. No, Hello. I just after Anuradha, sings for you. Aarti, I have a question for you. See, sorry, Sure. Mukta, I have a question for you. So the thing is, this transition from a doctor of, trying to become a doctor to a doctor of happiness, that's what you've become. ये transition के time पे, see, physical struggle तो face किया है. The things that you spoke about, you had to change jobs here and there, you had to travel and all that. Mental, emotional journey, उसके बारे में हम सब थोड़ा जानना चाहेंगे. And the fact that the way you said that, the moment you come in front of the mic, your vibration changes. Where do you exactly fill your inspiration cup? This is a very valid question. I was just thinking about asking to you. But first, let Anuradha sing. Maybe you'll get some time to think of. Thank you. I don't require any time. I'm very abrupt in speaking. Don't worry on that. Please. And Dr. Anuradha, she is an Ayurvedic practitioner and बहुत इनकी दवाइयाँ ऐसे लगती हैं हम सबको. And she loves singing. Yeah. Very nice. Sanji. Hi, Arjun Mukta. Hello. Hi. Yeah. How are you doing now? Yeah, I'm fine. And I'm a big fan of your voice. And today you are sitting just in front of me. It's a dream come true. Oh, wow. Lovely. And yeah, I just want to say a few things. I came to know that you want to become a doctor, but actually RJs are true healers. Yes. They are affecting such a larger section of society. That I'm realizing now. So hats off to you all. And not taking much time, I'd like to dedicate one song, Kahin Na Ja. I came to know from Anila that you love this one. So I just want to say, कहीं मत जाओ, आज आप यहीं रहो और आप बातें करते रहो, हम सुनते रहे. Okay. Please. Yeah. Yes, please. Thank you. कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, बाहों में आ जा, ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे, तेरे दिल की मंजिल है यहाँ, हो ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे, तेरे दिल की मंजिल है कहाँ, जाने वफा सच है किसी को पता, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, बाहों में आ जा. Thank you.
Very beautiful, ma'am. बहुत Thank you. सुंदर I always गाया say आपने। doctors being music as a hobby or singing as a hobby, it's a deadly combination, I tell you. सारे डॉक्टर्स पता नहीं कहाँ से आते हैं सिंगिंग लेके। ये आपने कल भी अपने शो में यही बात बोली थी while you were talking to a doctor, yeah. बहुत Yes. सुंदर अनुराधा, थैंक यू। Right, I said that. तो अब महाश्वेता का क्वेश्चन विल वांट टू आपका नेटवर्क में आवाज नहीं आ रही है अनिला? Yes. महाश्वेता कहाँ गए? Hello. We are all गायब हो here. गए? आवाज कहाँ गई? We are all हाँ, here. Can you hello. hear us? हाँ जी, I can hear you. Yeah. So Back to you're the saying question, that please. where do I Where do you get get the your energy? inspiration? I am my own motivator. I am my own motivator because if you not sleeping at night, if you're not happy from within, if you are going through ups and downs from your family, from your health, or from your people, professional people, the next very morning you have to get up with a new beautiful day, thanking God, and yes, coming back to energy. It will take time, an hour, 2 hours, 4 hours, but you have to end up sleeping that this day I have lived peacefully. This day might not be that good, but yes, in another few days again things will be better, or to my satisfaction, or to a new journey. I always made that a point. Never thought कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ problem हुई, but I have made myself one part that I have to run like a horse. See, a horse, I tell you, कि उसकी 360 degree की eyes होती है. You can see entire view. लेकिन जब उसको हम काम पे डालते हैं horse को, तो we have to block his eyes so that he should see on the front. So one person told me in my events time that you have to be like a horse. So then I didn't realize, but now I really feel I have worked, I have run like a horse. I have not even seen one vision, I have seen hundreds of visions at the same time, and I'm moving and moving and moving. आपको कभी भी नहीं पता चलता कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, या मैंने किसी को भी इतना नहीं पता लगने दिया कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ. I'm hard from in and out. Yes, I do cry. I do smile. I make people smile. I get smile from people because smile is contagious. But by the end of the day, I have to be more motivating in RJ. If I'm not sitting on the console, I'm not sitting in the studio, I still believe that every person is going through ups and downs. Every second. Every person is growing every second. तो जितना पॉजिटिव उस चीज को ना समझो उस चीज को, लेकिन आपको 2-4 मिनट 5 मिनट 1 घंटे बाद आपको वापस उस के लिए आपको नॉर्मल होना पड़ता है. यू हैव टू डू टास्क, यू हैव टू डू अ नेक्स्ट टास्क, यू हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट टास्क, यू हैव टू बी ready for a dinner, you have to go for something, you have to make yourself, you have to groom yourself. How do I groom myself? I study what? I study newspaper, I study magazine से इतना ये होता है रोज. आई जस्ट टेक 5 मिनट्स कि मैंने ठीक है मैगजीन का हेडलाइंस क्या है, पेपर की हेडलाइंस क्या है, मैगजीन में क्या क्या किस किस की लाइफ में क्या चल रहा है, आदित्य की लाइफ में क्या चल रहा है, तानिया की लाइफ में क्या चल रहा है, बट मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैंने आज तक किसी को नहीं बताया. बट यस, रीडिंग दोज थिंग्स has always put me knowledge with words, made my grammar, made my vocab very fine every day, every minute, every moment. अगर मुझे कोई न्यूज मिलती है, आई ऑलवेज रीड इट, मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन वेयरएवर आई कुड, या कुछ कोट्स होते हैं तो मैं दिमाग में नोट कर लेती हूँ, कहीं याद कर लेती हूँ, या मैं फोन की नोट्स भी बना लेती हूँ कि मुझे ये कहीं यूज करना है इस चीज को. एंड आई ट्राई व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई गेट, मे बी नेट एंड ऑफलाइन ऑनलाइन वेयरएवर, I put it and share it on Facebook, or put it for my store somewhere, so that from my end, information is not stuck to me, to my era. I always say, I always see that people connected to me, whether it's Facebook, whether it's Insta, whether it's WhatsApp, whether in person, whoever connects to me is always jealous of me because of being knowledgeable and an edge over others.
but I have never taken it to heart. I have said, okay, fine, that is their perspective. Let me be open. Let me be always motivating people and supporting people, because I have gone through rough patches for my life, professionally, personally, both ways. So I have always helped people coming out of their problems, helping and sorting them. I don't know why. It is in my nature from my childhood. I have never incurred this phase ever. But I have spoken to people, spoken their problems, given them solutions beside even knowing that I'm also going through something. I also need somebody's assistance or somebody's shoulder. But at the same time, I have always been smiling by the end of the day. I hope, Mahashweta, that's a good thing for you. Fully answered. Knowing me much better today. Wonderful, wonderful. Thank you so much. All inspiration pouring from your cup to our cups. This is truly heroic. Yeah. Very nice, very nice. And I would request Shantana, she wanted to sing one more song for Mukta. So, Shantana, are you there? Her camera is off. Okay. So, Mukta, we have Devi Dutt sir also, though his camera is off, but he's sending his blessings to you. Devi Dutt sir, brother Guru Taha. Yes. So we are Thank you. It's such a big privilege that he always attends Music Veranda every day since last 1.5 years. He has not missed a single session. Very nice. Thank you, sir. तबीयत भी खराब है तो भी उन्होंने join किया है because he wanted to meet you, to bless you. Yes, Shantana, you want to sing something? Hi, yes. Hello. Yeah. Am I visible? Yeah. There's a song, very beautiful, and all good words have been said for ma'am, and we are enjoying the evening. And here comes a beautiful song. आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, ओ खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है. Thank you so much. So nice. Thank you so much. So beautiful. I love this song. अब वो टाइम भी आ गया है जब हम आरजे मुक्ता को भी एक गाना गाने के लिए इनवाइट करें, और while you sing, think about the song, I would request GJ to say a few words. GJ, who is our host of Music Veranda, और बहुत प्यार से हमारे हर Music Veranda सेशन को होस्ट करते हैं. Yes, GJ, over to you. तो मुक्ता आपको एक गाना गाना है. Right. Next. Thank Yes, you so GJ. much, Neela ji. Yeah. Thank you so much, Neela ji. Hello, Arjay Mukta. How are you?
I am good. पहचान कौन, मुझे याद आ गया. Oh yes, you got it. उस टाइम बहुत कम था, नहीं को मेरे को बहुत सारी बातें करनी थी आपसे. And I'll be very honest, around 15 साल पहले मेरे को भी आरजे बनना था. Oh nice. फिर Yeah, I कैसे mean, रह गए? कहाँ रह that was गए? a time when I was working in a call center, like Converges, Patna Computers. तो उस टाइम मतलब ये जो फिल्मी हीरोज हीरोइंस होते हैं, वो सेलिब्रिटीज होते हैं, हम उनसे बात नहीं कर सकते, बस टीवी में देख सकते हैं. ओनली आरजेस ऐसे थे जो कि मतलब लाखों करोड़ों लोग डेली उनको सुन रहे हैं, और हमारे पास एक मौका आता था कि हम बात कर सकते हैं फोन मिला के. तो मेरे को ना चस्का लग गया था कि यार आज एक आरजे से बात करनी है, आज एक आरजे से बात करनी है. तो बस बातें करते करते मैं गेम भी खेलता, कॉन्टेस्ट भी जीतता. तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब उसकी हैबिट लग गई थी. और एक ऐसी चीज होती है ना कि किक देती है आपको, जो आप अभी भी बात कर रहे थे कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू फुल ऑन फोकस. आई वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड आई एग्री कि इट्स लाइक नॉट दैट इजी. प्लस हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि कई बार मूड ऑफ भी होता है, तब भी हम लोग फुल लगे रहते हैं कि हाँ यार वेलकम एंड फुल ऑन. you never show up कि हाँ यार अरे आज दिमाग का नहीं हुआ पड़ा है. बट ये मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को हैप्पीनेस दे रहे हैं, हमारी हैप्पीनेस डबल हो जाती है. आई कैन को रिलेट. तो मैं लेकिन आरजे बन तो नहीं पाया, लेकिन मैंने आरजे बन के प्रैंक बहुत ज्यादा करता था. तो मेरे को दोस्त बोलते थे गौरव यार तेरे को भी आरजे बनना चाहिए. मैंने कहा कोई नहीं, अभी प्रैंक करते रहते हैं, टाइम विल टेल. तो thank you so much for coming to Music Veranda. I'll just sing few lines. My throat is not well. अभी कल ही मैंने थोड़ा पैरासीटामोल वगैरह खाई है. Thanks to आरती, उसने मुझे blessings भेजी. तो I'm loving the Music Veranda. This thing कि every family जब भी किसी को कुछ होता है ना, वो blessings भेजते हैं और बहुत अच्छा लगता है. तो I'm gonna sing this song. आज वो साधना जी का बर्थडे भी है, तो एक पुराना सॉन्ग है उनका. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, म्यूजिक बरांडा में आज मुक्ता आप आए. कदम चूम लूं, निगाहें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए. So thank you so much. And there's a lot to learn from you, RJ Mukta. God bless you, yaar. I mean, whatever you're doing, you guys are a true healer. कई बार मतलब I still remember कि हम ड्राइव कर रहे होते थे. मतलब I'm talking about that era 2007, 2008, जब WhatsApp नहीं होता था. या तो हम सो जाते थे या हम FM सुनते थे. तो you guys were like hero कि हाँ यार आप इतनी सारी बातें करते थे और फिर कॉलर से बात करते थे. तो thank you so much for doing what you are doing. Yes, thank you जी. ठीक बोला. और आज के टाइम में जब हम सब लोग अलग अलग हो गए, तो हमारा शायद बेस्ट फ्रेंड आरजे ही बन गया है. हम उससे इतना हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ आरजे बोलता है तो हमें लगता है हाँ सब ठीक हो गया है. सो आई थिंक ठीक हो गया. कई बार तो ये होता है कि हाँ दोस्त से बात नहीं करनी, आरजे से बात कर लेते हैं. हाँ. फोन मिलाओ और बस बात करो. दिन नहीं रात में ऑप्शन होती है. बोल रहे हैं और स्माइल आप इधर कर रहे हैं. Exactly. दैट इज द कनेक्शन. मतलब वो कनेक्शन है. वो कुछ बोल रहा है और स्माइल आप यहाँ कर रहे हैं. हाँ. अरे कई बार ये लोग आरजे लोग कोई स्टोरी सुनाते हैं, लगता है कि यार ये तो हमारे बारे में बात चल रही है. इसको कैसे पता. बिल्कुल करेक्ट, राइट. बिल्कुल वही मैंने बोला ना, कहीं आपको लगता है कि म्यूजिक आपको ढूंढ रहा है, कहीं आपके वर्ड्स आपको ढूंढ रहे हैं थ्रू रेडियो, थ्रू बीइंग आरजे. आपको कैसा लगता है. बिल्कुल. तो आरजे आपसे गाना सुनना चाहेंगे और कोई मजेदार कोई किस्सा आपकी एज एन आरजे आपको ध्यान आ रहा है तो प्लीज शेयर करें. मजेदार किस्सा तो क्या रोज ही होता रहता है. हम लोग खुद ही अपने आप में मजेदार होना पड़ता है हमें. बोलने में, चलने में, कुछ भी करने में. और ऐसा कोई किस्सा तो ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा. आपने शायद बोला तो शायद सोच के रखती सुबह से. बट गाने की बात है तो गाना कोई आप लोग ही बताओ तो मैं गा दूंगी थोड़ा सा, अगर मुझे ध्यान होगा कोई तो गाना. अरे वही वाला जो आप गुनगुनाते रहते हैं. चलो एक दिमाग में है मेरे. अजीब रास्ता है ये, शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना हो समझ सकी न हम, ये रोशनी के साथ क्यों
धुआं उठा चिराग से, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। मैं शायद पैरा मिस कर दी, बट यही लाइन था कुछ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सकी न हम। एक गाना और है जो आपके भी छोटे 10 इयर्स वाले ने गाया था, वो बोलता, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, की आंखों से आवाज़गी नैना बरसे रिमझिम नैना बरसे बरसे बरसे। थैंक यू। थैंक यू, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर गाया, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप लोग आपने जो सॉन्ग लिस्ट आज शेयर की थी, जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स थे, सो वी वर सो हैप्पी एट म्यूजिक कराटा कि आपकी इतनी रिफाइंड और इतनी खूबसूरत सॉन्ग चॉइस है, यू नो, एंड यू आर एक्चुअली एज एन आरजे यू आर एक्चुअली डूइंग दैट, यू नो, स्प्रेडिंग गुड सॉन्ग्स। जो हमारा इतना सुंदर खजाना है गानों का, वो आप इतने लोगों को सुना रहे। So thank you. Keep doing the good work. Or anything that anyone has to add to before we wrap up this show. And Mukta, one more thing that I would just wanting to add कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे किसी से मिलना है तो कोई एजेंडा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन हम वो चीज भूल गए कि बस ऐसे ही मिल रहे हैं लोगों से, ऐसे ही गपशप हो रही है, ऐसे ही बिना एजेंडा के पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, यू नो, आजकल हर चीज है कि भाई कुछ है। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? See, I am the first person to initiate any meeting, any get together or any talk. I am that open. पहले मैं बहुत shy होती थी, बहुत इंट्रोवर्ट होती थी कि कैसे किससे क्या बात करूं। और मैं ना किसी से बात करती थी, पहले मुझे लगता था सिर्फ लिप्स से बात करनी है, मैं आंखों को देख के बात नहीं कर पाती थी कभी भी। बड़ी मुश्किल से मैंने लिप्स से ऊपर आके देख के वन ऑन वन ऐसे करके बात करना शुरू किया। बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज को। और मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने आप को इतना मोल्ड इन किया कि मैं आइस ब्रेकर बन गई। आई टेल यू व्हाट, जब किसी से लड़ाई हुई या कुछ भी, चलो ठीक है, ब्लॉक करने का सिस्टम तो अब शुरू हुआ है। हम फोन नहीं किया मीन्स ब्लॉक हो गए, बात नहीं हुई, या किसी से नहीं मिले बात नहीं हुई, या किसी को सामने देख के इग्नोर किया, जैसे स्कूल से मैं करते थे वही बात हुई। बट उस टाइम पे मैंने फाइनली रियलाइज किया कि सॉरी, हाँ जी बोलिए, प्लीज कैरी ऑन, कंटिन्यू कर। हाँ प्लीज। तो जी, तो मैं आइस ब्रेकर बन गई एक टाइम के बाद। सो व्हेन पीपल यूज्ड टू कॉल टेल मी कि अरे यार यू गुड दैट यू कॉल्ड अप एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट यू एंड आई वाज थिंकिंग टू से सॉरी और से थैंक यू, और ये कोई बात शेयर करनी है या उनसे बात करनी, किसी बात नहीं, दे वर लाइक ऑलवेज टेलिंग मी यू आर एन आइस ब्रेकर टू टेल मी कि भाई ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक, जो हुआ नहीं हुआ, लड़ाई हुई खत्म करी, एंड देन लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक। इट इज ऑलवेज बीन लाइक दिस विद मी। मतलब किसी से मेरी खत्म भी हुई और किसी तीसरे ने भी आके बोला, तो मैंने बोला यार when I have not spoken to you, when you don't know what I have gone through, so let's not the third person come in between. It's between me and him or her. लड़ाई हुई है, सॉर्ट करना है नहीं सॉर्ट करना, that is our problem, our thing. The third person should never come into it in solving at all, because अब जैसे मतलब भाई बहन है, उनकी लड़ाई है, फ्रेंड्स वन ऑन वन की लड़ाई है, जैसे मेरी किसी से लड़ाई है, so I was always prefer कि मेरी उनसे ही बात हो, उसी इंसान से बात हो, गर्ल हो बॉय हो, बड़े हो छोटे हो, कोई भी हो, ये उनसे ही बात हो। कि जितनी आप बात करोगे या जितनी आप लड़के भी और लड़ोगे या क्लियर करोगे, तो और कोई तीसरा बंदा उसको ना समझ सकता है ना उसको सॉर्ट कर सकता है, क्योंकि आपका दिलो दिमाग आपके दिलो दिमाग में ही है कि आपकी ये बात पिंच हुई है या नहीं हुई है। सो जब तक आप उस चीज को क्लियर नहीं करोगे, मेरे दिमाग में हमेशा वो चीज हॉन्ट करती रहती है, जब तक वो बात क्लियर नहीं होती है, या वैसे वो सालों लग जाए, महीनों लग जाए, दिन लग जाए, घंटों लग जाए, कुछ भी लग जाए,
बट इट इज ऑलवेज देयर. जब तक वो बात क्लियर नहीं हुई है तो मेरे दिमाग से वो चीज उतरती नहीं है. आई हैव ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू, आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं कहती हूँ दुनिया गोल है. अगर आप किसी से लड़ रहे हो या आप किसी से आराम से बात कर रहे हो, आप कोई अच्छाई बांट रहे हो या आप दुख बांट रहे हो, परेशानी बांट रहे हो, इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू. आपको वो कहीं ना कहीं फॉर्म में वो बंदा आता ही आता है, सॉरी बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, या फिर बात शेयर करने के लिए. क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एक बेस्ट फ्रेंड, किसी और का बेस्ट फ्रेंड, वो घूम घाम के आपके बेस्ट फ्रेंड आपके पास वापस आ जाते हैं. किसी न किसी फॉर्म में वो बात आ जाती है, या वो एक थैंक यू सॉरी या एक अच्छा डीड, गुड डीड आपके पास वापस आ जाता है. राइट? तो हाँ जी गौरव. हम लोगों को ना गपशप करते रहना चाहिए, क्योंकि गपशप करने से बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है, लाइफ बहुत जॉय भर जाता है. और हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एजेंडा वाली बात करनी है या समझदारी वाली बात करनी है ना. So that's one message of the show, and it was great to have a conversation and capture with RJ Mukta, and through this program we had the privilege of sharing our gratitude to all the RJs and especially you. So thank you so much, और सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने आज परफॉर्म किया. A big thanks to Dr. Mahashweta for connecting us to Mukta. थैंक यू सो मच महाश्वेता. एंड गुरुजी को मैं प्रणाम करती हूँ. गुरुजी मुक्ता जो बच्चे गा रहे थे गुरुजी के सुपरविजन में वो लोग सीख रहे हैं. सो ही इज ट्रेनिंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑल अक्रॉस द कंट्री, और बहुत अनकंडीशनली. नमस्कार गुरुजी. बहुत अच्छा लगा मुक्ता जी आप यहाँ आए इतना कीमती वक्त निकाल के. बहुत अच्छा लगा रहा है, बेहतरीन शो. मैं देख रहा था फेसबुक पे, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. आप यहाँ पे आए, इतने बातचीत हुई, इतना आदान प्रदान हुआ विचारों का. बच्चे लोग भी अच्छा गा रहे थे, सभी अच्छा कर रहे थे. तो मैंने कहा कि आप, मैं तो कहूँगा कि आप बार बार आइए. अब दोबारा आप टाइम बताइए कब आ रहे हैं आप, तो हम चाहेंगे कि आप आते रहें यहाँ पे. आप तो हमारा शो का जो है ना इतना सम्मान बढ़ा, इतना मतलब रख दिया, मान सम्मान, और बहुत अच्छा लग रहा है. चलिए तो मैं भी 2 लाइन गा देता हूँ. मैं 2 लाइन सुना देता हूँ आपको. साधना जी का है थोड़ा सा, हालांकि मेरे बच्चे ने गा दिया है गाना. हमको मिली है आज घर या नसीब से, हमको मिली है आज घर या नसीब से. जी भर के देखने हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो. लग जा वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा मुक्ता जी. और मेरा गुरु जी का विनम्र निवेदन है आपसे कि आप दोबारा यहाँ पे आए, टाइम निकाल करके. आप आते रहे भी, जब आपको सहूलियत लगे तो आप जरूर आए यहाँ पे, और हमारे बच्चों का गाना सुने आप. और जो है, जो भी आपकी तरफ से बच्चों को सहयोग हो सके आप सहयोग भी दें, उनको मार्गदर्शन भी दें, क्या करना चाहिए इनको आगे बढ़ने के लिए. ये आप लोग ही इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते रहें. और हमारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सीख भी रहे हैं कई बच्चे. और तो मैं चाहूँगा कि आपका जो इसमें है बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए, और आप यहाँ आते रहिए.
थैंक यू अनिला जी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके धन्यवाद के पास तो सबसे ज्यादा अनिला जी हैं, जो आप इनको लेके यहाँ पे आए, उनको लेके आप यहाँ पे आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिला जी को। गुरुजी, फायदा तो मेरा ही हो रहा है, धन्यवाद अनिला जी। इतनी सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिल पा रही है। तो अनिला 2 लाइन तुम्हारी तरफ से प्लीज। हाँ अनिला जी गाइए ना, वो जो 2 लाइन आज नहीं, मुक्ता बोलो ना। डॉक्टर महाशी will end the show. गाए अनिला जी, गाएंगे? अनिला ने भी 2 लाइन गानी है, कोई भी गाना सोचिए। रुकिए मैं स्केल देता हूँ। गाइए, वो आपको सुर देंगे। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज गाइए। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, उसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ। थैंक यू। ठीक है। Very nice. What an apt song for you. Yes. तो महाश्वेता सुर में है अनिला जी, देख लो। अभी है। मैं तो पकड़ रही थी कि अभी गलती निकालूं और फिर लगाऊं इसको। हाँ गलती नहीं, अंतरा भी सुर में गाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुक्ता, this is just for you and your life's philosophy, so to say. See, I have only known the veneer of आरजे मुक्ता। आरजे मुक्ता के अंदर जो एक अथाह सागर है, उसको मैंने शायद आज थोड़ा सा मैंने महसूस किया। तो yes, definitely that, you know, we can fill our cups of inspiration by our own selves only. And जिंदगी है, कभी खुशी है, कभी गम है, so absolutely। तो ये निदा फासली साहब का एक बहुत प्यारा गजल है जिसे किशोर कुमार जी ने गाया था। It goes like this. कभी कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, जो आता है वो जाता है। ये दुनिया आनी जारी है, यहाँ हर शय मुसाफिर है। सफर में जिंदगानी है, अभी ये मौत मत आना, अभी तेरी जरूरत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर ये जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। Thank you so much, and I salute the joie de vivre, you know, attitude in you. May you stay like this. Thank you once again. Good night. Bye everyone. Take care. Let's fill our life with Shabba khair. Thank you guys. Thank you so much. Bye bye.